ओके, नेक्स्ट जो पार्ट बी है इसमें दिया है ड्रॉ लेबल रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के डिनोट करते हैं डी से, विच इज 25 सेंटीमीटर फॉर एन एडल्ट आई। तो ये आपको लेबल रे डायग्राम बनाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। So for the compound microscope, the objective is of smaller aperture as compared to the eye. So let's say this is the objective lens. Let this be the principal axis. So these lenses are coaxially placed. ये आपका optical center है. This is the optical center of the objective lens. So the object here is denoted by AB. So this is object AB. Let's say the object is placed beyond the focal length of the objective lens. Let this be the focal length. और ये जो image जो बनाएगा that is beyond the focal length. So जो ray of light parallel आएगी that will go through the focus. This will go through the focus, and one that goes to the optical center will pass undeviated. Okay, so let's say it forms the image here. This image is real and inverted, A dash, B dash, and this is the object distance. This is the focal length of the objective lens. So it's formed way beyond the focal length of the objective lens. अब next हमारे पास है eyepiece lens which is of greater aperture than the objective lens. So let's suppose this is the eyepiece lens. Okay, थोड़ा सा, this is the eye lens. Now the rays of light gets reflected from here. Image is formed when they are produced backwards. Okay. और आप व्यू करोगे इमेज को यहां से. This is the human eye from where you are going to view the object. So the image is formed at least distance of distinct vision, that is 25 centimeter. तो somewhat आपको जो image जो मिलेगी, this is virtual and erect. अगर इसको हम प्रोड्यूस कर लें तो ये कहीं इधर, they will intersect here. So this is the final image formed, A double dash, B double dash, which is virtual and erect compared to this. अगर इसके साथ कंपेयर करोगे नहीं, ये जो है this
image, which was real inverted image, which was formed by the objective lens acts as a virtual object to the eyepiece lens. So it's at the focal point of the eyepiece lens. अब ये इमेज जो है दिस एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट टू द आई लेंस, और इसको देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इन्वर्टेड है, तो इमेज भी यहाँ इन्वर्टेड, तो कंपेयर टू दिस इट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसके साथ कंपेयर करें तो फाइनल इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, एंड दिस इज, अब इसकी डिस्टेंस यहाँ से 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस, सो इट्स फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन. So this is a ray diagram of image formation by a compound microscope.